Vanakkam, Vandanam, Namaste, Namaskar, good evening, Sat Sri Akal, and welcome to Postmortem with Bala Nagendran, the most enlightening show on radio, on and only on Radio Udaan, a flight of life. Dear all, you're listening to Radio Udaan, a flight of life, the number one online radio station of India, produced and thoroughly managed by the persons with visual challenges, where we are going to get 8 hours of entertaining shows and the 16 hours of musical extravaganza. So Radio Udaan, 24/7, the space shuttle that transforms your life from stress to bliss. This is Bala Nagendran live from Chennai, has come with an issue to provide you an impartial analysis where you can only get enlightenment. That's why this is Postmortem with your Postmortem specialist Bala Nagendran. Enlightenment begins here. The issue that we are going to deal with is on the hot spot nowadays. It is hitting the headlines. We are going to see about the statutory body that talks about an important issue that deals with more than 150 million people of the country. We are going to talk about one of the greatest source of entertainment. We are going to dissect what is hidden behind the curtains. Why these controversies are erupting, where it started, how it has evolved, and where we are at present, and what is the future progress of this institution. We are going to talk about a sectoral concept that deals with more than 1 million beneficiaries, and as I've said, approximately 150 million beneficiaries throughout the country. We are going to talk more about the issues, so stay tuned to Radio Udaan, a flight of life. Keep listening Radio Udaan, enjoy Radio Udaan. Keep listening Postmortem every Thursday to 9 p.m. 60 minutes of enlightenment with your Bala Nagendran, where I'm going to provide you an impartial analysis of an issue. Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Nowadays, there is no clarity of subject on a particular subject. There is no clarity of information on a particular subject. Thousands of channels and reports. We are on the collision of whom to trust. That's why I have come here to make you all trust, because we care for trustworthy information. Neutrality is the hot spot, the core, the epicenter of Postmortem. That's why this is Postmortem. Enlightenment begins here. So stay tuned to Radio Udaan and enjoy Radio Udaan by www.radioudaan.com. Go to www.radioudaan.com, radioudan.com, where you can submit your feedback. For instance, if you're listening to Postmortem, and if you want to give your feedback for the betterment of Postmortem, you can go to www.radioudaan.com after 9 o'clock and provide your valid feedback by selecting the show Postmortem with Bala Nagendran and rating the show from excellent to poor. Excellent, very good, good, okay, poor will be the choices in front of you. The choices that you're going to make will help us in better progress. So go to www.radioudaan.com and submit feedback. If you want your voice to be heard across the globe, we are ready to make your voice to be heard across the globe. The only thing that you need to do is fill up interested to become RJ form. Go to radioudaan.com and fill up the form interested to become RJ, where if everything works well, we would approach you and your voice will be heard across more than 100 countries and by more than 20,000 listeners per month. What more on www.radioudaan.com? You can get to know about the program schedule and the agenda of Radio Udaan. You can get to know the purpose. You can also download the playlist of the various systems and computers and mobile phones through which you can listen. While speaking about mobile phone, we are on Android
as well. So go to Google Play Store and download Radio Udaan app and enjoy Radio Udaan 24/7. Request archive through www.radioudaan.com. You can fill up the form request archive and you can get your favorite show and you can listen when and wherever you want. You can also, in fact, it is your legitimate moral duty to go to www.radioudaan.com and fill up the monthly survey of Radio Udaan. This month's survey is about the 2 years progress of NDA regime in disability sector. Apart from that, if you want to be with us on social media, we are on social media as well. Facebook.com/Radio Udaan will take you to our official page and group where you can stay and put your incessant flow of valid thoughts, ideas and suggestions for the better progress of this wonderful platform. Stay tuned to Twitter. If you are a Tweeple, follow our day-to-day operations at Radio Udaan at RADIOUDAAN. If you want to interact with your favorite idea at the time of your favorite show, for instance, if you're listening to Postmortem and if you want to interact with me right now, I am on Skype. Skype me. I will reply you. And if you want some of the contents to be added in the show, I would be glad to read your name and the contents on air. So hurry up. Skype me. Skype ID is Radio Udaan. RADIOUDAAN. Go to YouTube.com and subscribe to our channel Radio Udaan. Yes, we are on YouTube as well. So subscribe. As many subscriptions we receive, our enthusiasm will triple. Let's listen Radio Udaan's most enlightening show, Postmortem with Bala Nagendran, where we are going to dissect an issue that talks about the entertainment of the millions. There are more than 13,000 theaters in the territory of India. More than 15 million beneficiaries getting their entertainment served every day. Remember, every day. India's cinema industry is the largest in the world. Its governance and the release of the benefactors are also largest. Approximately 1,250 films, apart from the video films and short films, are released every year. So, what India requires? A pure, autonomous, regulatory body. For that, there was a provision granted in the year 1952. Accordingly, in the year 1952, a statutory body has been established. Why we are talking about the 1952 statutory body right now? Because that body has been susceptible to more controversies than ever in the past 2 years. It is getting a super duper blockbuster hits in almost all the national and regional newspapers and television medias. Hence, we have chosen today to discuss about an important board that plays the pivotal role in making all of us to enjoy the films that we want. We are going to talk about the origin, the amendments in the Act, what the 1952 Act says, the guidelines and the rules, in between the recommendation, and what is happening at present. What the courts are saying, why the courts are intervening while there is an appellate tribunal. We are going to dissect this larger issue that governs 13,000 theaters and more than 15 million people per day into small pieces, and we are going to understand the hidden secrets behind the curtain. Through your own and only enlightening show, Postmortem with Bala Nagendran, live from Chennai, only on Radio Udaan, of Light of Life. Stay tuned, don't go anywhere. More information are awaited in the next link. यार सुमित,
एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिम्पल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिम्पल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 PM and repeat every Wednesday 4 to 5 PM only on Radio Udaan, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
Central Board of Film Certification. CBFC is going to be the corpse that we are going to dissect, that we are going to provide our post-mortem report after 9 o'clock. Central Board of Film Certification, the organization or the statutory body that is on the spotlight. It has attracted more media than the movies. It has even attracted more fans towards it than the movies itself. Why? Because it has been under serious controversy. Not only now, it was there in the past, even at the time of 2014, which led to the resignation of nearly half of the total members of the board, led by the then chairperson, Leela Sampson. Why it is happening? What happened to Central Board of Film Certification? How this controversy has become possible? Why there is an intervention from the government? Is it necessary from the government? Has any committee has been constituted to recommend for redressal and regulation mechanism? Everything is going to be dealt in our dissection periods. The first Indian movie was Harichandra. It was released in the year 1913. Although at that time there was no act. In the year 1920, the Cinematography Act was passed. Even then, there was no regulation except the British imperial policies. At that time, there were 4 major regions, out of which 3 were in Chennai, Mumbai and Kolkata respectively, and the 2 were from Lahore, which is today in Pakistan, and Rangoon, which is today known as Yangon, or Yangon, which is in Burma or Myanmar. When India attained independence, all the acts passed by the British has been repealed. Hence, the 5 regions of the film censorship has also been repealed. Then, in the year 1952, the Cinematograph Act was passed by the Independent Republic of India. According to the Act, in the year 1952, the Censor Board was established. But we need to talk about Central Board of Film Certification. Today's Central Board of Film Certification is what? Yesterday's Censor Board. How Censor Board has turned into CBFC. There was immaculate evolutions. How it has happened? As soon as it has been established, guidelines has been promulgated, the law has been passed. Hence, this Censor Board is a statutory body. Accordingly, there will be a chairman and board members not exceeding 25. At present, there are 23 members, including the chairperson, Palaj. And the board should contain 7 female members as a mandatory. Okay, what the Censor Board has to do, how it governs the entire India.
what are the provisions granted to govern the entire Indian film industry. We'll tell you in the next link only on Radio Udaan, A Flight of Life. You're listening to Postmortem with me, Bala Nagendran. Enlightenment begins here. नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहाँ मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ।
as we have been talking about censor board, how it was functioning. Censor board has been constituted as a union entity, that is a statutory body, and to govern the state level organizations, the state level performances functioning, and to decentralize the process. It has been established with 9 regional centers, and it still continues. So every movie that is produced has to go to the regional center first. When the examination committee has been settled, then after the movie would reach the higher authorities if it is necessary. Accordingly, according to the Cinematograph Act of 1952, there were only 2 certificates. U, that is unrestricted publicity, and A, the movie that can only be viewed by adults. Adults in the sense, those who have completed the age of majority, that is 18. So, when we speak about these sort of restrictions and certification, there was a dialogue that there is a freedom of expression, and movies also have its own freedom of expression. Won't it violate the constitutional right? The answer is not at all, because every freedom of speech and expression has its reasonable restrictions. Accordingly, the Cinematograph Act of 1952 has granted that the certificates can be withdrawn by the censor board if it feels that the content, verbal or picturesque, is in violation of the constitutionality, and if it contravenes in derogatory comments, if it violates the integrity of a woman, if it showcases unwarranted, insulting scenes and wordings that could spoil the relationship of 2 nations. The list goes on. Accordingly, the movies have been surveillanced and certifications have been made. Here comes another change in the year 1983. Before that, it has to be said that the Act of 1952 gone into some amendments and also government notification guidelines. The last notification was issued in the year 1991. So we can find the sluggish movement of one of the world's largest industries governing body. In fact, we can say the past censor board and the current Central Board of Film Certification is the most restricted or strict organizations in the world, owing to India's cultural, historic and heritage respect. When we talk about certification process, every director and the producer has to undergo the step-by-step process to get their movie publicized. However, the 1952 Act is silent on the posters. That's why there was a need, and hence in the year 1983, the Central Board of Film Certification Rules 1983 has been promulgated. This is the government's official notification, hence it has been accepted. That's where the censor board has been turned into Central Board of Film Certifications. Only that? Not at all. There were various changes, alterations, and also inductions. We are going to see everything in the next link only on Radio Udaan, a Flight of Life. You are listening to Postmortem with me, Bala Nagendran. Enlightenment begins here. रेडियो उड़ान पर
मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या आप रूबरू होना चाहते हैं फिल्म जगत की लेटेस्ट खबरों से? जानना चाहते हैं किसका हो रहा है ब्रेकअप या फिर किसने किसको किया है टेकअप? कौन सी मूवी है इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर या किसकी जेब को लग रहा है चूना? इन सभी खबरों के लिए बी विद मी एवरी सैटरडे 7 to 8 PM and re-webcast every Sunday 2 to 3 PM only on Radio Udaan, a flight of life. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना CV या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। Well, the 1983 rules of Central Board of Film Certification, that has altered the nomenclature from Censor Board to Central Board of Film Certification, as well as it has
put in valid guidelines. According to that guidelines, any filmmaker who violates this provisions, the certification authorities guidelines, would be susceptible to fine of 1 lakh or 3 years of imprisonment or both. This was already there in the Act of 1952. However, the 1983 rules have mandated it in many spheres. It has also added 2 more certificates, that is UA and S. We have seen 2 certifications according to the 1952 Act, according to 1983. In addition to those 2, there were UA and S certificate movies. What is this UA? According to UA, the movie is unrestricted, but the adult contents that has to be viewed by the child with the parent control. The child in this sense is the children who are below the age of 12. In the A certification, the adult is equal to those who have attained the age of majority, that is 18 years. That's how this difference, and this different plays sometimes counterproductively. How? We will see in coming links. But as of now, let's get back to the certification types. As we have seen, the UA and another one is S. S is special category status. This movie cannot be made available for public view. This movie is only for those who are specialized in a particular field. For example, some movies are meant for the scientists. Those movies have to be viewed only to the scientists. Some movies are meant for doctors. That movie is only viewed to doctors. Some movies are meant for lawyers, and that movie is only to be viewed to lawyers. So this is what S. Although there were VA and VUA kind of certificates, both resemble UA and A as well. Thus, the 1983 rules had transformed, in fact played a pivotal role in evolving this film certification. And as per the time, things have passed, various interpretations have been given, courts have intervened, appellate tribunals have intervened, and ultimately we are standing here in the year 2016 where the movie, the Punjabi movie, that is getting hit due to many cuts by this Central Board of Film Certifications. What are the difference between the Censor Board and the Central Board of Film Certification? What are the interpretations made by many experts? When we see, since 1952, the Central Censor Board is about to censor. But since 1983, as soon as the nomenclature has been changed to Central Board of Film Certification, its functioning has become enveloped to some extent, that is up to certification. Hence, many experts review this as the board should only care of certification, not of censorship. There are differences between censorship and certifications. However, majority have the opinion that obscene, incendiary, unwarranted scenes, words have to be removed and cut. In that sense, there is a conflict between censorship and certification. There is a need for amendments or a new law. Fortunately, as per the information that we have gathered, the government of India is looking forward to enact a new law for cinematography. Well, what are the major actions taken by the government? But before that, we need to understand the terms and the appointment of the members of the Central Board of Film Certification. The said 23 members have to be appointed by the central government. Even in one of the conferences, the present Union Minister
for Information and Broadcasting, Rajyavardhan Singh Rathore, has said that the members of Central Board of Film Certification should not be loyal to their parties but to the government. Hence, the central government has the sole authority to appoint the members, including the chairperson. This has been widely debated and discussed by considering the validity and the loyalty and the integrity of the members as they are going to be appointed by the central government. The 2014 Messenger of God MSG movie has opened the doors to many. Not only the movie, but the aftermath of the verdict of the appellate tribunal by cancelling or quashing the certificate issued by the Central Board of Film Certification banning the movie, which led to the resignation of the then chairperson Leela Sampson and nearly half of the board members. They declare that they are resigning due to unwarranted political interference into the proceedings of the board. The board comes under the Ministry of Information and Broadcasting, and also Leela Sampson happened to be the second woman chairperson in a row, followed to Sharmila Tagore, who was the longest served chairman in the history of Central Board of Film Certification since 2004 to 2011. We regret the intercepting technical difficulties. Now everything is fine. As we have talked about Sharmila Tagore, she has assumed office on October 13, 2004 and debuted on 31st March 2011. Leela Sampson assumed on April 1st, 2011 and resigned the year 2015 due to the controversy of Messenger of the God. Then Palaj Nihalini has been appointed as the chairperson of CBFC. This appointment has also hit various controversies, yet our motto is to observe what is happening in Central Board of Film Certification. As soon as this issue erupted, there was a committee established. The committee under the chairmanship of the veteran filmmaker or the regarded filmmaking expert Shyam Benegal. The Shyam Benegal committee has come with some quality recommendations. What are the recommendations of Shyam Benegal committees? Who were the members of Shyam Benegal committee? What about the Shyam Benegal committee stands on the amendments, as well as what about its views on enacting a new law? Do the government of India should look for new law, or the present law is enough with addition of some amendments? We'll tell you more in the next link only on Radio Udaan. You're listening to Postmortem, the most enlightening show on radio, with me, Bala Nagendran. आलू है, गोभी है, मटर, टमाटर। आलू है, गोभी है, मटर, टमाटर बाबूजी एकदम बढ़िया ताजा है। सेब है एकदम मीठा सेब बाबूजी, एकदम मीठा सेब ले लो। अरे बाबूजी सेब ले लो, सेब एकदम मीठे हैं, बढ़िया एकदम। ले लो बाबूजी। अरे भैया ये सेब का भाव दिए? अरे बाबूजी ले लो, 120 रुपए किलो है। अच्छे हैं? अरे एकदम बढ़िया बाबूजी, कश्मीरी सेब हैं। अच्छा अच्छा, 2 किलो दे दो। दे रहे हैं बाबूजी अभी। ले बाबूजी। अरे रे रे, 1 मिनट, तुम इन्हें पॉलिथीन में क्यों पैक कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक होती है, क्या तुम्हें पता नहीं है? बाबूजी ये कैसे? देखो, जब हम इन पन्नियों का यूज करते हैं तो इसमें रखा सामान खाने योग्य नहीं होता। दूसरा, जब हम इसे फेंकते हैं तो पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित होता है। पानी में डालें तो पानी को भी दूषित करता है।
और साथ ही साथ हमारी नन्ही नन्ही मछलियाँ इसमें फंस जाती हैं, जिससे उनका दम घुट जाता है। या फिर हम इन पॉलीथीन बैग्स को जलाएं तो उससे निकलने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी स्वच्छ वायु दूषित हो जाती है। तो ऐसी खतरनाक चीज का हम उपयोग क्यों करें भला? सही कहा बाबूजी आपने। अब हम कबहू ना प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करीब। अब तो हम हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करीब और पन्नी का भी इस्तेमाल नहीं करीब। दोस्तों, ये तो समझ गए, और आप नहीं समझे तो समझ जाइए। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। विजिट ऑन www.radioudan.com। कभी तड़प, कभी तन्हाई, कभी बेबसी तो कभी इंतजार। ये मर्जी क्या खूब है ना, जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो मामला हो टूटे दिल का, या आपको आपके अपने ही कर रहे हो नजरअंदाज, क्योंकि स्नेहा के पास है इन सब का इलाज। नजराना अब से हर शनिवार रात 8 से 9 नजर आएंगे प्यार के कुछ नए रंग इन नजराना प्यार का। मेरा RJ स्नेहा ओनली ऑन रेडियो उड़ान। ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। नजराना भेजा किसी ने प्यार का। वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voiceforblind voiceforblind@gmail.com। मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। मधुर संगीत मधुबन खुशबू देता है। कलाकारों के जीवन की रोमांचक बातें। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशर्म, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। और पर्दे के पीछे की कई सुनी और अनसुनी कहानियां। गीत गाता चल ओ साथ। सुनना न भूलिए प्रोग्राम गीत गाता चल मेरे यानी RJ भूषण के साथ बुधवार रात 10 से 11 और पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 5 से 6 आपके चहीते और फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों,
आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। Welcome back to the last segment of Postmortem Enlightenment begins only on Radio Udaan with me, Bala Nagendran, where we are dissecting Central Board for Film Certification. As we've been talking about the recommendations made by Shyam Benegal Committee, the committee comprised of veteran actors like Kamal Haasan and many other filmmakers, journalists, ad makers, and so forth. The committee has come with some recommendations, the most significant of them all being that the Central Board of Film Certification should be confined to certification alone. There shouldn't be censorship. There should be a special regulatory body in the regional wings for censorship. The certificates has to be on UA. There has to be 2 more certificates, UA 12 plus, UA 15 plus. And they also added that whenever the movie is being submitted, and there should be a particular period of time within which the Central Board of Film Certification has to grant certificates. It also should restrain from more cuts, as it could collapse the core concept of the movie. The committee also added that it should look into the content, then the verses, rather than vice versa. It also suggested to increase the penal measures. Apart from all these, now the recommendations are in the table of the ministry and the government. We need to look forward to what is going to happen in pertaining to the recommendations of Shyam Benegal Committee on Central Board of Film Certification. However, we also should step in and to provide an ample opportunity to the government to control violation of our entertainment. Our entertainment should not be adulterated with violent, sexual, abusive contents. At the same time, we as a rational human being should take a prompt decision of what we want. And let's be rational, let's be neutral. With that note, it's time for me to take a leave and to pave a way for Tech City, the technocratic show, only on Radio Udaan, of Light of Life. Keep listening Radio Udaan, enjoy Radio Udaan. I'll meet you all on Sunday 8 to 9 p.m. on your most informative show, World This Week. Stay tuned, don't go anywhere, and never forget to fill up the survey of Radio Udaan's monthly survey that talks about the 2 years progress of India regime in the disability sector. And don't forget to feedback about today's post-mortem. Thank you for listening, and I'll meet you all next week, Thursday to 9 p.m. with another issue and with another dissection. Till then, take care of yourselves if possible, take care of others. Good night. Buenas noches. Vanakkam. बरखुदार, ये जो फैन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक फैन जिसके चक्कर में लोग भागते हैं, और एक दूसरा फैन जो अपनी चक्कर में लोगों को भगाता है। ओह माय गॉड, सलमान खान! ओए 15 अप्रैल फैन मूवी शाहरुख खान की, और मैं ना देखूं, इम्पॉसिबल। रेडियो उड़ान पर फैन की पलटन, यानी कि मेरी पलटन। आपने सुना क्या? रेडियो उड़ान प्रेजेंट चबरा वाला फैन।
हाय डियर, दिस इज अंकिता और मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी वाली जबरी वाली फैन हूँ क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, उनकी पर्सनालिटी पसंद है और मुझे पूरे के पूरे शाहरुख बहुत पसंद है और मैं उनकी ये वाली मूवी जरूर देखने वाली हूँ क्योंकि मैं उनकी जबरी वाली फैन हूँ। हाय, दिस इज पार्थ सुंदरा फ्रॉम गुजरात, बड़ोड़ा से। मैं RJ बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन, ये सब मुझे बहुत प्यारी लगती है और एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं उनका बहुत 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 बड़ा जबरा वाला फैन हूँ। हाय, मैं हूँ शालू और मैं अजय देवगन की जबरा फैन हूँ क्योंकि मुझे उनके स्टाइल, एक्टिंग सब बहुत पसंद है और उनका जो मेन शायरी बोलने का अंदाज है वो तो बहुत अच्छा लगता है। हाय, मैं अहमदाबाद से गुजरात से पार्थ बात कर रहा हूँ। जब फैन की बात हो रही है तो मैं शाहरुख खान का जबरा वाला फैन हूँ क्योंकि शाहरुख खान की जो भी मूवी आती है वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है और उससे जो एक्टिंग करती है वो भी एक्टिंग बहुत बढ़िया होती है, जिससे मैं शाहरुख खान का जबरा वाला फैन हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवि लखनऊ से और मेरे फेवरेट हैं सबके फेवरेट सलमान खान। मैं हूँ उनका सबसे जबरा वाला फैन क्योंकि उनके स्टाइल, उनका लुक्स, उनके डांसिंग, उनका एक्टिंग मुझे सब कुछ बहुत पसंद है और वो सब कुछ जबरदस्त है। वो सच रियल बीइंग ह्यूमन है। मैं हूँ सलमान खान का जबरा वाला फैन। हेलो एवरीवन, तो मैं यानी कि डेविड जोशी का जबरा वाला फैन और कोई नहीं, हमारी सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी RJ धड़कन यानी कि आप ही हमारी सबसे वाला जबरा वाला फैन हो क्योंकि सच में जब से मैं आपको सुनता आया हूँ आपसे सबसे बड़ा फैन हो गया हूँ क्योंकि आपके जो बोलने का अंदाज है, जो आपका आवाज की कमाल है, पर्दे के पीछे रहकर भी जिस तरह आप ऑडियंस को पकड़े रहते हो, तारीफ काबिल है और इसी अंदाज पे तो मैं फिदा हो गया हूँ। सो डेविड जोशी का जबरा वाला फैन RJ धड़कन। खातिरदारी में कमी नहीं छोड़ेंगे, आपकी ख्वाहिशों को सर आंखों पे रखेंगे क्योंकि आप हैं तो हम हैं, बाकी सब कम है। तो बरगुदार अपने कानपुर के स्पीकर का वॉल्यूम और आँखों के पिक्सल का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए क्योंकि मैं यानी RJ धड़कन लेकर आ रही हूँ जबरा वाला फैन इस शुक्रवार शाम 7 से 8 बजे ऑन एयर रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ।